My name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। जीके बहुत ही वास्ट एरिया है और इसकी तैयारी करते वक्त आपका एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हर वीडियो में मैं एक हफ्ते का जीके और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस गेन हो जाएंगे, जिससे कि आपका नॉलेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और तो और हर वीडियो में जो रिसर्च के लिंक्स हैं वो हम कंपाइल करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। हेलो, और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जीके फॉर क्लैट 2024 और मई वीक 4 के जीके का आज रिकैप करेंगे। एज यूजुअल सेशन का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही रहेगा। क्विकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मई वीक 4 के मैं डिस्कस करूंगा और उन टॉपिक्स पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने रखूंगा। एंड होपफुली एट द एंड ऑफ द सेशन थोड़े नए टॉपिक्स पे आपका नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा, राइट? एज यूजुअल जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस डाल रहा हूँ हमारे पोर्टल पे आपके लिए अवेलेबल होंगे इन द टेस्ट फॉर्मेट। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आप रजिस्टर करें हमारे पोर्टल पे, क्योंकि रिवीजन के लिए आप वो क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हर क्वेश्चन पे, हर पैसेज पे मैं आपको इंपॉर्टेंट रिसर्च लिंक्स भी दूंगा, विच मीन्स कि इन क्वेश्चंस के अलावा हर पैसेज में मैं 4-5 क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बट उनके अलावा अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करना चाहते हैं, आई थिंक दैट कुड बी योर इंपॉर्टेंट सोर्स, राइट? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं डिस्कस करूंगा, केरला के सुविनियर सेक्शन के लिए जो उन्होंने नया प्लान बनाया है। सेंटर का ऑर्डिनेंस दिल्ली पे सर्विसेज के जुरिस्डिक्शन को लेकर के 1984 राइट्स केस पे जगदीश टाइटलर अरेस्ट हुए हैं, एफआईआर फाइल किया गया उनके अगेंस्ट। सो अपडेट ऑन दैट। क्वाड समिट जो अभी रिसेंटली हुआ है, ओटीटी फॉर द डिसेबल्ड, बेसिकली द गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई ओटीटी के नॉर्म्स जो डिसेबल्ड पर्संस के लिए हैं वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। श्रीलंका स्लैम्स कनाडा, श्रीलंका और कनाडा के बीच में एक टिफ हो रही है। ट्रांसजेंडर्स इन पाकिस्तान, इनके अगेंस्ट एक लॉ इनैक्ट हुआ था which gave them protection, but that has now been scrapped. ट्रांसजेंडर्स पे ऑब्वियसली ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। ओवरसीज स्पेंड्स अंडर द टैक्स नेट, बहुत सनसनी खेज खबर थी ये, क्योंकि एंड इट्स ऑब्वियसली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रिपल्स। इसके अंडर क्रेडिट कार्ड्स स्पेंड्स भी जो है ओवरसीज अगर आप स्पेंड करते हैं अपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स पे, तो दे विल आल्सो बी अट्रैक्टिंग टैक्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो एक ट्रीटी है, उसके बारे में अपडेट आएगा। न्यू नू इज द न्यू जमतारा। फिशिंग स्कैम्स में जमतारा काफी फेमस है, एक शो का भी एक टारगेट है ये, बट उस पे नू भी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा ये भी जो है स्कैनर के अंदर आ रहा है, तो इस पे थोड़ा सा क्विकली टेक अ लुक एट दैट। ONDC जो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एग्जीक्यूट, व्हिच इज द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ICET इंडिया और यूएस का स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस, डिफेंस पार्टनरशिप। थर्ड FIPIC फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड्स कॉन्फ्रेंस कोलैबोरेशन। एंड EU जो है मेटा पे 1.3 बिलियन डॉलर्स का फाइन लिवाई करती है। दैट्स अ वेरी बिग न्यूज। ब्रिक्स पे obviously BRICS has been in the news lately, but इस पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तेलंगाना एंड AP का वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा रिवर पे ये डिस्प्यूट काफी टाइम से चलता आ रहा है। एंड कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एंड हाउ दैट अफेक्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स। एंड फाइनली इंडिया अपने सुपर कंप्यूटर्स को अपग्रेड कर रही है, नए सुपर कंप्यूटर्स अक्वायर कर रही है, which will be the fastest that India has ever owned, right? So those are this week's quick digest of news. आइए पहले टॉपिक पे आते हैं, केरला क्यूरियोस। बेसिकली
केरला ने जो है सोललेस चाइनीज सुवेनियर्स का सामना करने के लिए केरला ने अपना एक नया मिशन, नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें कि वो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करे गए आर्टिफैक्ट्स, सुवेनियर्स जो है प्रोड्यूस करेगी, राइट? सो दैट्स एन इनिशिएटिव दैट केरला हैज स्टार्टेड. इस पे क्वेश्चंस देखते हैं. दिस इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड बाय द टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ केरला. फ्लैग ऑफ किया था उन्होंने. उनका नाम बताइए. ये किस इनिशिएटिव के अंदर आती है? ये जो प्रोजेक्ट है, जिसमें कि टूरिस्ट को होम ब्रांडेड सुवेनियर्स दिए जाएंगे, व्हिच विल बी क्लोज टू केरला's कल्चर हेरिटेज, एंड दिस इनिशिएटिव इज आल्सो पार्ट ऑफ अ लार्जर मिशन बाय द स्टेट ऑफ केरला. उस मिशन का नाम बताइए. और केरला के बारे में थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. इट्स आल्सो वेरी पॉपुलरली नोन एज डैश कंट्री, राइट? तो ऑब्वियसली फिल इन द ब्लैंक. इट्स अ वेरी इजी आंसर. एंड फाइनली ये जो मिशन है, ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, उसको डेवलप करने के लिए एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी आइडेंटिफाई करी गई है. दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन 15 डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला, बट उनमें से स्पेसिफिकली एक जो है हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन. तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बताइए. राइट, तो आंसर देखेंगे. मोहम्मद रियाज हैं टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ केरला, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है फ्लैग ऑफ किया था. ये इनिशिएटिव जो है केरला सुवेनियर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, जिसके अंडर ये 15 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये यहाँ पे सेंटर्स बनाएंगे और यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे, एंड दिस विल फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ सुवेनियर प्रोडक्शन. और ये जो प्रोजेक्ट है वो केरला के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अंदर आता है. और इसमें जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को हाईलाइट करके रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है, दैट्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बेपुर. केरला ऑब्वियसली इज वेरी पॉपुलरली नोन एज गॉड्स ओन कंट्री, राइट? सो ये इस टॉपिक के ऊपर था. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेंटर का ऑर्डिनेंस. ऑब्वियसली दिस हैज बीन इन द न्यूज लेटली. दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टसल होता जा रहा है अबाउट who holds power, who commands the portfolios. Recently Supreme Court ने एक ruling pass करी थी, whereby they declared that Delhi government should be in charge of services except for a few portfolios. But उस decision को नजरअंदाज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, प्रोमलगेट किया है ये ऑर्डिनेंस, जिसके अंडर जो है सर्विसेज का जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी, राइट? एंड ऑब्वियसली द आप गवर्नमेंट इज going all out in protesting against this move. They're calling it unconstitutional. और ये summer break के पहले ये move pass करना means that it also buys the government some precious time, right? The central government. चलिए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं. ये ऑर्डिनेंस जो है कौन प्रोपलगेट करता है, राइट? यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करती है तो इट हैज टू बी प्रोमलगेटेड बाय व्हिच पर्सन हु होल्ड्स दिस पोजीशन एट द करंट टाइम. और कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस नए ऑर्डिनेंस ने क्रिएट किया है. दिस न्यू स्टैट्यूटरी बॉडी will be headed by which person, and it's a 3-member body, and in a reversal of the verdict by the Supreme Court, this ordinance says that the final authority over transfer, posting, vigilance and other incidental matters relating to service will rest with which which person, which authority. तो आंसर्स देखेंगे. ऑर्डिनेंसेस यूजुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्रोमलगेट कर सकते हैं व्हेन इट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट्स कैन आल्सो प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, in which case it will be the governor of that particular state. The president of India currently is Shri Draupadi Murmu. और ये जो प्रोमलगेट किया है ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस ने एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट करी है कॉल्ड the National Capital Civil Service Authority, the NCCSA. और ये जो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, इसके हेड होंगे. दिस विल बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, इन विच केस इन करंटली इट इज श्री अरविंद केजरीवाल. और although it will be headed by the chief minister of Delhi, ये अथॉरिटी जो है ओनली रेकमेंड करती है for transfer, posting, vigilance and other similar matters पे ये recommend ही करती है. The final authority will rest with the Lieutenant Governor of Delhi. इस पे और भी 2 questions है. Which article of the Constitution contains special provisions with regard to
द नेशनल कैपिटल और टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली को स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दिया जाता है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, और यू नो विच इश्यूज जो जो मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के पहले भी, इवन बिफोर दैट, द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट recognizes Delhi as a special case, as a union territory, but different from other union territories. Usme which issues have been exempted from the legislative powers of the Delhi government, right? So ये चीजें जो है पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में enshrined है. तो आंसर देखेंगे इसका. आर्टिकल 239AA is the article that confers a special position to the National Capital Territory of Delhi. And under this position, the legislative powers are not extendable to the issues of land police and public order, right? And I think the current controversy is about services and appointment of officers for various positions. And Supreme Court कह रही है कि भाई ये दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार ही करेगी, इलेक्टेड जो सरकार है, but the government, the union government obviously wants to have control over those things, right? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. जैसे मैंने बताया था 1984 एंटी सिख राइट्स के केस में मिस्टर जगदीश टाइटलर के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करी गई है. उनको उनके अगेंस्ट जो है दे booked him in that particular case for instigating, for inciting and provoking the mob that gathered outside the पुल बंगाश गुरुद्वारा, और वहां पे 3 सिखों की मौत भी हुई थी, राइट? तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे. इन मिस्टर जगदीश टाइटलर को किन ऑफेंसेस के अंडर बुक किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है आफ्टर द 1984 राइट्स हैपेंड, the central government appointed a commission, right? So which commission was appointed to probe incidents during these riots? When was this commission appointed, and when did the commission table its reports, which led to obviously the Ministry of Home Affairs to appoint the CBI in order to investigate the case against Mr. Jagdish Tyler and other accused. Or finally, in 1984 anti-Sikh riots, which was the central event that snowballed into this very very calamitous riots. So answers देखेंगे इसके. मिस्टर जगदीश टाइटलर को मर्डर, राइटिंग एंड अबेटमेंट के चार्ज में जो है बुक किया गया है. जो 1984 सिख राइट, एंटी सिख राइट्स थे, उसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए नानावती कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस वाज appointed in the year 2000, and it took them 5 years to table their report, and once they tabled their report in the year 2005, उसके बाद CBI अपॉइंट हुई और उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन किया अगेंस्ट Mr. Tytler and others. And this entire fiasco happened right after Sri Indira Gandhi, who was our prime minister at that point in time, उनको उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने जो है मर्डर कर दिया था, राइट? एंड असैसिनेशन करने के बाद जो है obviously there was a huge sentiment and which was utilized by a lot of mobs, and well, the situation got really out of control in those times. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्वाड समिट. वेल, क्वाड के जो 4 कंट्रीज हैं, including India, they met over a very very short meeting that happened, and they pledged deep concern over Ukraine, and they also said we'll give humanitarian aid, और उन्होंने कहा कि भाई हम we want peaceful resolution, right? So क्वेश्चंस देखते हैं. क्वाड के बारे में काफी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये जो शॉर्टेंड वर्जन हुआ था ये क्वाड समिट का, ये हुआ था इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ऑफ द US, he had to shorten his trip. Originally he was supposed to fly down to Australia, but because of the because of the debt ceiling need that needed to be raised in the US, he had to rush back, and so this Quad summit happened in a hurry, so it was a shortened version. So ये shortened version जो है कहाँ हुआ था, और इस summit को जो है किस country ने host किया था? Even though it happened in one country, it was hosted by another. So can you name that country? The city that is hosting the Quad summit is also hosting another global summit. Which summit are we talking about? And Quad countries ने एक joint statement present किया था on, and this joint statement detailed
three specific statements about the quad principles, right? तो इसमें से कौन सा एक डोमेन नहीं है जो इन प्रिंसिपल्स में एड्रेस हुआ था, right? So in fact, three principles, so can you name those, right? And finally, who currently holds the annual rotating presidency of the G7, right? Answers देखेंगे. Where was the quad meeting held? It was held in Tokyo. Sorry, it was held in Hiroshima, and it was hosted by Australia. Prime Minister of Australia Anthony Albanese ने जो है इस summit को host किया था. इसके अलावा हिरोशिमा में इसी टाइम G7 का भी summit हो रहा है. And although India is not a part of G7, we've nonetheless been invited. So नरेंद्र मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उस पे पार्टिसिपेट भी किया है. And joint statement by the Quad countries included, three specific principles with regard to clean energy, with regard to clean supply chains, and it did not include, a statement about peace and stability in the Indo-Pacific region. So, बहुत pointedly जो है चाइना का mention नहीं किया है, although they did mention peace and solidarity, but not specific to the Indo-Pacific region. And currently, the rotating presidency of the G7 is being held by Tokyo, which is why the meeting, which is why the G7 summit happened in Japan. Next topic पे आते हैं, OTT for the disabled. Well, despite the boom of OTT content, pandemic के बाद ये हुआ, but सरकार का मानना है, and in fact I think most of us will agree that there is a huge gap in how this content can be friendly for disabled viewers, right? People who are visually and hearing challenged viewers, so basically the content streaming services platforms need to make efforts to make their content more accessible to such viewers, right? So ये बात government of India ने उठाई है. तो इस topic पे जो है, what is the system called where a user को जो है access मिलता है at a time chosen by them, any content in electronic form, and this is transmitted over a computer source, right? So इसका नाम क्या है? And code of ethics में जो है, the government has made it very, very clear that accessibility of content should be, there should be made efforts by the streaming service, by the platform. तो ये जो है code of ethics में और क्या-क्या mentioned है, किस legislation में किस authority ने जो है ये पावर दी जाती है कि वो OTT content को, OTT platform को regulate करे, और इस regulation के मुताबिक जो है online curated content को classify कौन करता है, age classification इसका कौन देता है. And finally, name the technology that that can describe the sounds and background music score in a film or a TV show, especially for people with difficulty in hearing, right? What's that technology called? Accessibility का एक बहुत बड़ा पहलू है ये. तो answers देखेंगे. On demand system is where user can select and play content, the movies or films in electronic form, by selecting at a specific point in time. And the code of ethics, which are mentioned in the IT rules, include three major points: the classification of content in age appropriate categories. It also mentioned that platforms must exercise discretion, कि भाई वो ध्यान दें कि sovereignty और integrity India की जो है maintain हो, और national unity का ध्यान रखा जाए, multiple races or languages or religions के बारे में sensitive रहें, right? So it makes it their responsibility, and also finally to make content more accessible to disabled persons, right? And these code of ethics are mentioned in the IT intermediary guidelines and digital media ethics code, right, which was passed in 2021. ये rules they spell out करते हैं इनको, और इन rules के मुताबिक, इस regulation के मुताबिक जो है, platforms and streaming services are supposed to classify online content themselves, and they're supposed to self-certify content themselves, right? So पूरा उन्हें उन पे डाल दिया गया. There is no film certification board of India. So that's the thing. And finally, there are two kinds of specific technologies that can be used for accessibility. Closed captioning होता है जो describes the sounds and background music in films and TV shows,
whereas audio description tracks, well, they describe what is happening in the screen for visually challenged viewers. So that's those are technologies that can improve accessibility. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. श्रीलंका गवर्नमेंट ने जो है कनाडा को स्लैम किया है अबाउट देयर about them being very very insensitive and commemorating the Tamil Genocide Remembrance Day on the 18th of May, right? आपको याद होगा कि यहाँ सिविल वॉर हो रहा था श्रीलंका की कंट्री में एलटीटी के अगेंस्ट जो है and obviously LTT means that it was Lankan Tamils. So at one end तमिल जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे के नाम से मनाया जाता है, बट मनाती है कनाडा, बट इसको कंडेम करते हुए श्रीलंका ने बोला दिस इज नॉट रियली द केस. दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. इट्स काइंड ऑफ ironical, because otherwise it actually does acknowledge that there was a civil war, that there was LTT, and that action was taken against them, although they maintain कि ये humanitarian gesture था उनको liberate करने के लिए, but anyhow that's where it is. तो जनवरी 2023 में जो है कनाडा ने सैंक्शंस इंपोज किए थे. तो किस पे किए थे? श्रीलंका का सिविल वॉर जिसके बारे में मेंशन कर रहे हैं वो कौन से साल में एंड हुई थी? And instead of Tamil Genocide Remembrance Day, what does Sri Lanka celebrate the next day, May 19th, as? And जो final battle हुई थी, where the civil war ended and left a lot of civilians dead, civil casualties, और in fact वहाँ पे मेमोरियल भी मनाया भी जाता है, मतलब कमेमोरेट भी किया जाता है जो वहाँ शहीद हुए थे. उस साइट का नाम बताइए. एंड फाइनली श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट का नाम बताइए. तो आंसर्स देखेंगे. The sanctions were imposed by the Canadian government on former presidents Gotabaya Rajapaksa and his brother Mahinda Rajapaksa. दोनों जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं श्रीलंका के, एंड obviously फरार हो गए थे once the civil war, once they recently fled actually, because आरोप है उन पे कि काफी they got a lot of kickbacks, and well, they left the country behind in deep debt. So उन पे sanctions impose किए जनवरी 2023 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने. श्रीलंका का सिविल वॉर 2009 में एंड हुआ था फाइनली, एंड on account of that Sri Lanka celebrates May of 19th as a victory day. Mullaivakkal is the name of the site जहाँ पे फाइनल सिविल वॉर का लास्ट जो स्टेज था, जहाँ पे सिविल वॉर लड़के मतलब खत्म हो गया था, मुल्लाईवक्कल. एंड फाइनली करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इज रनिल विक्रमसिंघे, और इनफैक्ट पिछले आई थिंक 2 साल से वो पावर में रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. वेल, लाइक आई सेड, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था रिकॉग्नाइजिंग ट्रांसजेंडर्स एंड गिविंग देम इक्वल राइट्स, उसके अगेंस्ट जो है एक्टिविस्ट्स ने एक ठान लिया है कि भाई हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके, सॉरी, अगेंस्ट द रीसेंट रिलीजियस कोर्ट के रूलिंग व्हिच डीम्ड दैट ट्रांसजेंडर्स are giving them legal protection is actually un-Islamic, and hence it's null and void, right? So that's something that has happened. तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो है कौन से साल में ये पास किया था लॉ which guaranteed basic rights for transgender citizens, and also outlawed any sort of discrimination against transgender persons by government and private employees as well as government employees. So employers, sorry. तो किस साल में ये रेगुलेशन पास किया था? उस कोर्ट का नाम बताइए, पाकिस्तान के फेडरल रिलीजियस कोर्ट का नाम बताइए, जो ये जज करती कि भाई लॉज जो है इस्लाम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है. पाकिस्तान के इस रिलीजियस जुडिशरी ने जो है जो ये पास किया था वो कब एस्टैब्लिश हुई थी, और किस मिलिट्री डिक्टेटर के अंडर जो है ये ये कोर्ट की स्थापना हुई थी. एंड फाइनली रिसेंट रूलिंग में इस कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के अगेंस्ट क्या रूलिंग पास करी है, राइट? सो आंसर्स देखते हैं. 2018 में जो है सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको बेसिक राइट्स दिए थे और बोला था कि भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है. पाकिस्तान रिलीजियस कोर्ट इज कॉल्ड द शरीयत कोर्ट, एंड द शरीयत कोर्ट ने जो रूलिंग दी है, इनफैक्ट इन द फर्स्ट टाइम द शरीयत कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1981 बाय
the military dictator at that point in time, Zia-ul-Haq, और शरीयत कोर्ट ने जो है अभी रूलिंग दी है कि भाई ट्रांसजेंडर पर्सन्स को उनका उसका डेफिनेशन जो है स्ट्राइक ऑफ कर दिया है इन लॉ, and also undoing their right to any sort of state documents like a passport, or their rights to hold property that matches their self-ascribed gender identity, right? So those kind of rights have been stripped away from transgender persons in Pakistan. So ye it's a very sad step. Next topic पे आता है, overseas spends under the tax net. Like I said, the government had already started taxing overseas spends, but मतलब काफी सारी चीजें जो exempt थी, जिसमें lower tax slabs थे, including credit card spends have now come under TDS, right? तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि एक ऐसी स्कीम होती थी जो इंडियंस को जो है $2.5 lakh a year allowed them to make remittances abroad, और इस बात पे जो है इस साल बजट 2023 में एक टैक्स चेंज भी हुआ था, अंडरवेंट टीसीएस रिविजन। तो इस स्कीम का नाम बताइए। बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने जो है एक प्रपोजल रेज किया था कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, उसका रेट जो है ओवरसीज टूर पैकेजेस पे पहले जो 5% होती थी उसको बढ़ा के कितना बनाया जाए। एंड फाइनली इस महीने मई 2023 में फाइनेंस मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन ने जो है कौन से स्पेंड्स को टीसीएस के अंडर, द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के अंदर ब्रिंग इन किया है। इस नोटिफिकेशन ने जो है कौन से रूल्स अमेंड किए हैं, राइट, इन द ईयर 2023। एंड फाइनली after introducing this regulation, itna backlash hua that the government had to sort of pull it back. So they exempted, limit of, a certain amount. They exempted on credit card usage for international transactions. And this was the, what was the amount per financial year from any sort of TCS level. तो आंसर्स देखेंगे। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS के नाम से वो जाना जाता है कि अगर आप रेमिटेंस कर रहे हैं टू कंट्रीज अब्रॉड, टू डेस्टिनेशंस अब्रॉड, तो $2.5 lakh तक आप रेमिटेंस कर सकते हैं। और उस पे ऑब्वियसली एनी रेमिटेंस फॉर एजुकेशन एंड फॉर हेल्थ केयर वाज एक्सेप्ट, बट LRS स्कीम के अंडर जो है 5% टैक्स उस पे भरना पड़ता था। बट निर्मला सीतारामन जी ने जो है ओवरसीज टूर पैकेजेस के स्पेंड्स पे जो है 5% से 20% बना दिया, और ये भी बोला कि LRS स्कीम में पूरा का पूरा अमाउंट जो है अब TCS will be levied on it, right? And finally, in May this year, Finance Ministry notification brought credit cards also under the remit of LRS, and hence would attract that tax collection at source. And this was, this notification amended the Foreign Exchange Management Act, Management Rules of 2023. ये current account transactions के relation में है. And once the backlash happened, the Finance Ministry जो है वापस ले लिया, और बोला कि 7 लाख रुपए तक अगर आप स्पेंड करते हैं सालाना क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पे, then that will be exempt from any sort of TCS levy. तो ये थे आंसर्स इन क्वेश्चंस के। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। वेल, दिस आइडिया जो है of northern countries and southern countries sort of collaborating and creating a transport corridor, free movement of goods and services, first mooted in 2000 की बात है ये जब मूव किया गया था। और आइडिया तब था कि रशिया को इंडिया के साथ लिंक किया जाए, right from the Baltic Sea coast in Russia to the western ports in the Arabian Sea, right? So the north-south transport corridor included this entire development would happen in the countries of Iran, Russia, India, and these three countries also signed a preliminary agreement, right? And they this agreement was to develop the 7,200 kilometer long international north-south transport corridor, right? NSTC. तो ये 2022 की बात, 2002 की बात है। But finally, which country signed up for the above project? 2002 में जो ये agreement साइन थी, उसको 2005 में कौन सी कंट्री ने साइन अप किया?
इवेंचुअली एनसीटीएस एनएसटीसी में एनएसटीसी एग्रीमेंट में कितने कंट्रीज ने इवेंचुअली कितने कंट्रीज ने इवेंचुअली इसको रैटिफाई किया और obviously after the Ukraine war and sanctions on Russia, मिस्टर पुतिन और इब्राहिम राइसी जो ईरान के लीडर है, उन्होंने एक वर्चुअली एक एग्रीमेंट साइन किया इन ऑर्डर टू डेवलप 162 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे ट्रैक, राइट? सो कौन से यू नो डेस्टिनेशन, कौन से लोकेशन का है ये रेलवे ट्रैक, विच इज अ क्रूशियल लिंक फॉर दी एनएसटीसी। तो इसका ट्रैक का नाम बताइए, रेलवे लाइन का नाम बताइए। और मिस्टर पुतिन के मुताबिक जो है एनएसटीसी इज अ बिग ऑल्टरनेटिव टू मूवमेंट ऑफ ड्रग्स ऑफ गुड्स थ्रू विच वेरी पॉपुलर रूट। एंड फाइनली इंडिया ने मांग अभी करी है कि भाई एक कौन सा पोर्ट जो है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकली फॉर अस एंड इट्स अ पोर्ट दैट ironically does not lie in India, it's actually a port based out of Iran, तो उसको भी इस कॉरिडोर में कनेक्ट किया जाए, बिकॉज that's a port that India has a collaboration with, right? तो आंसर्स देखेंगे। अजरबैजान ने जो है 2005 में एनएसटीसी साइन किया था और करंटली एनएसटीसी को 13 कंट्रीज रैटिफाई कर चुकी है, विच इंक्लूड the first three, India, Russia, and Iran, but also eventually ratified by Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Oman, Tajikistan, Turkey, and Ukraine, right? So those are the countries that have ratified it, right? And Rast Astara is the name of the railways that जिसको डेवलप करने के लिए यूएस और ईरान ने जो है अभी एक अग्रीमेंट साइन करी है। और प्रेसिडेंट पुतिन के मुताबिक जो है ये जो एनएसटीसी कॉरिडोर रहेगा, दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर द सुएज कैनाल, व्हिच इज a very very important link between the western world and the Asian European subcontinent, Asian European landmass, let's say, right? और इंडिया जो है मांग कर रहा है एनएसटीसी में चाबहार पोर्ट, which should be linked to the NSTC corridor. That's what India wants. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वेल, फिशिंग के बारे में है। न्यू का जो शहर है इन हरियाणा, इट्स अपेरेंटली बिकम द न्यू साइबर क्राइम हब। जमतारा के बाद जो है यहाँ पे भी तकरीबन 28,000 लोगों को डूब किया गया। कुछ 60 people have been arrested in this case, and about 100 crores has been embezzled from people, right? So ये खबर आई है, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि एक ऑनलाइन स्कैम एक टाइप की होती है जिसमें कि कंज्यूमर्स को टारगेट किया जाता है by sending them an email or a message that contains fraudulent information, और उसके द्वारा, उस मैसेज के द्वारा या ईमेल के द्वारा उनके पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस स्कैमर्स ले लेते हैं, राइट? सो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ स्कैम कॉल्ड? एंड देयर इज अ कंपनी कॉल्ड टानला प्लेटफॉर्म्स, जिन्होंने जो है इट्स अ क्लाउड कम्युनिकेशंस फर्म। इनके रिसर्च के मुताबिक 30 करोड़ लोग जो है वल्नरेबल हैं टू दिस काइंड ऑफ अटैक्स इन इंडिया, and according to them, how many people annually fall prey to इस टाइप के स्कैम्स? और इस हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने जो है एक अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म, जिससे कि अगर आपको एक फिशिंग मैसेज आए तो वो ओपन ही ना हो, राइट? सब्सक्राइबर की तक पहुंचे ही ना। तो सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग platform that they've piloted, and they've piloted this on which mobile network. और इस प्लेटफॉर्म को जो है अनवील किया था, लॉन्च किया था इन विच कांग्रेस, विच बिग ट्रेड मीटिंग। और ये जो ट्रेड शो था वो 27 फरवरी से लेके 2 मार्च तक होल्ड किया गया था। ये कौन से शहर में हुआ था जहाँ पे ये लॉन्च भी हुआ है? एंड फाइनली त्राई के चेयरमैन ने जो है ये तानला का जो है एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया था। उनका नाम बताइए। So I think by now you should have known that phishing is the name of this kind of a scam, and Tanla platforms के मुताबिक 5 लाख लोग out of the vulnerable 30 crore people in India fall prey to scamsters, और इन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया है to prevent phishing messages from reaching subscribers, वो पायलट कर रहे हैं on the Vodafone network, and they launched this platform at the Mobile World Congress, which was held
in the city of Barcelona, right? और इसको इनॉग्रेट लॉन्च करने के लिए ट्राई के चेयरमैन पीडी बाघेला जी आए थे, right? So those are your answers. Next topic पे आते हैं ONDC, the Open Network for Digital Commerce, which the Union government is pushing through as an alternative to the monopoly जो बड़े-बड़े platforms और e-commerce platforms हैं, उनका hold कम करने के लिए the government is very keen to sort of roll this out. तो उन गवर्नमेंट के मुताबिक ये जो इनिशिएटिव है, this will change the fundamental structure of the e-commerce market from being currently what kind of a structure does it have, and it will make it, at least envisages करती है कि ये इसको open network model बना देगी, right? तो open network for digital commerce is modeled after which other service currently provided, which current initiative by the government of India, उस पे मॉडल किया गया है, आप बताइए उसका। और कौन से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो रिलक्टेंट है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, इस नेटवर्क पे आने के लिए। ये इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री की, कौन सी डिपार्टमेंट की है। एंड फाइनली ओएनडीसी करंटली पायलट स्टेज में है और गवर्नमेंट ने जो है उसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई है। उस काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, उनके प्रोमिनेंट 2 मेंबर्स का नाम भी बताइए। So currently all these e-commerce firms have a platform centric model, and the ONDC seeks to make it an open network model. जो open network model है for digital commerce, ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जैसा इसका मिशन है, इसका व्यू पॉइंट है, एंड दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज वांटिंग टू डू। बट बिग कंपनीज लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट आर वेरी वेरी रिलक्टेंट टू रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म। उनके हिसाब से हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, एंड they probably are even partially right. But the ONDC initiative is has been one promulgated as at least started by the Department of Promotion for Trade and Internal Industry and Internal Trade, right? So DPIIT ने which comes under the Ministry of Commerce, उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और प्रेजेंटली उसमें ओएनडीसी के लिए उन्होंने 9 मेंबर काउंसिल एक बनाई है, जिसमें फेमस पीपल आर नंदन नीलकानी जो एक्स इन्फोसिस के थे और यूआईडीआई के पहले चेयरमैन भी थे, और उनके अलावा जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आर.एस. शर्मा जो है इस एडवाइजरी कमेटी में बैठते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं यूएस और इंडिया का ICET, which is initiative on critical and emerging technologies, जो पिछले साल इस साल के स्टार्ट में लॉन्च अनाउंस किया गया था। उसके अंडर एक मीटिंग हो रही है इंडिया और यूएस की, एंड इट्स सपोज्ड टू बी क्वाइट अ लैंडमार्क मीटिंग फॉर अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स दैट विल हैपन। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि जो कौन सा जॉइंट इनिशिएटिव है जो एक्सपेक्ट हो रहा है कि भाई ICET में जो मीटिंग होने वाली है बिटवीन India and the US. There's a very, very big announcement, very, very big joint initiative which is supposed to be announced, right? So name that, name that initiative. India और US के बीच में एक particular group है, which is the apex official level mechanism, policy making के लिए between the Department of Defense of India and the under US Department of Defense, और इन दोनों के बीच में this this kind of a body will comprehensively review और सारे aspects defense collaboration के जो है oversee करेगी, especially with regard to policy, right? So name that group. And इस group के 17th meeting को जो है चेयर किया इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने, and obviously co-hosted by the Under Secretary for Defense of Policy, Colin Kahl. मई 2023 में ये मीटिंग हुई थी, राइट? सो इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी का नाम बताइए जिन्होंने ये conference co-chair किया था। And finally, amongst the two major sort of expectations out of PM Modi's visit to the US are number one, that एक इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ एक डील फाइनलाइज करेंगे जिसमें कि इंडिया में एक प्रोडक्शन लाइन सेटअप होगा फॉर बिल्डिंग इंजन्स फॉर द इंडियाज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK तेजस MK2, एंड बिसाइड्स दैट एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, राइट, आर्म ड्रोन्स जो है इंडिया US से खरीदेगा फॉर ऑल द 3 divisions of their armed forces, the Air Force, Navy and the Army, right? Specifically the Navy. तो इस ड्रोन का नाम बताइए। It's supposed to be a very very advanced drone, and India desperately has been asking for it, right? So it's also expected to go through. तो आंसर्स देखेंगे इसके, इंडसेक्स और the US India US
defense acceleration ecosystem, right? Or in short, INDESX. इस पे announcement होने का expectation है. And this comes on the back of the defense policy group's apex level, meeting that happened in May 2023, which was, chaired by the Defense Secretary of India, Shri Giridhar Animane, and co-chaired by the Undersecretary for Defense of Policy, Colin Kahl. और इस मीटिंग जो अपकमिंग मीटिंग है, where ICET पे काफी बड़े-बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं. उसमें दो स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स दैट everybody has been looking forward to are, number one, कि जनरल इलेक्ट्रिक बिग इंजन मैन्युफैक्चरर उनके साथ एक कोलैबोरेशन करेंगे कि दे सेट अप अ प्रोडक्शन लाइन टू मैन्युफैक्चर इंजन्स फॉर India's light combat aircraft Tejas Mk2. And the second announcement that is expected is कि इंडिया जो है यूएस से एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदेगी, which is a high altitude long endurance armed drones, right? So killer drones, or काफी powerful killer drones. इनका range और the battery life is also supposed to be very very high. Next topic पे आते हैं. The third FIPIC meet summit that PM Modi sort of attended, that and obviously viral भी हुआ था इस पे एक image. तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे. First of all, what is FIPIC, and how many members does this forum have, and when was it launched and where was it launched? और इसका ये तीसरा समिट है. तो पहला समिट तो लॉन्च के टाइम पे हुआ था. दूसरा समिट कौन से देश में हुआ था? 2015 की बात है. And obviously after that pandemic happened, and there was a big hiatus. Third commitment happened, will happen when Shri Modi visits there. And at the PSIDS, which is the Asia Pacific Small Island Developing State, right? India Pacific, sorry. मीटिंग हुई थी इनकी इस समिट की इन 2019, और इंडिया ने जो है कितना पैसा कमिट किया था फॉर implementation of high impact developmental projects in whichever sites these countries choose. Remember, all the member countries get aid from India, right? And obviously these are all Pacific islands, so India के लिए interest है ये कि इनका each of these islands has EEC, or what is called the extended economic zones, EEZs, और ये coastal marine zones होते हैं जो stretches to around, even though the islands are very very small, it stretches to around 200 kilometers around them. So and these are internationally recognized waters, territories. So and these territories can be used for exploration and development, underwater, undersea sort of development. So India के लिए ये काफी crucial माना जाता है, क्योंकि if you have an agreement with these nations, then it also sort of controls the power that China can hold in the Pacific Ocean. And finally, इस समिट का एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी के चरण छुए थे, राइट? तो उनका नाम बताइए, उस लीडर का नाम बताइए. तो आंसर देखेंगे. FIPIC stands for Forum for India Pacific Islands Cooperation, और इस forum में अभी currently 14 members है, including India, and the forum was launched in the year 2014, in the island nation of Fiji. PM मोदी ने वहां विजिट किया था और पहला समिट वहीं पे हुआ था. सेकंड समिट जो है इंडिया के जयपुर शहर में हुआ था 2015 में. और फाइनली इंडिया PSIDS और द Pacific Small Island Developing Nations, Developing States, इनको जो है $1 million each, so total sum of $12 million was committed by India towards implementation of high impact developmental projects in sites of their choice, in areas of their choice. And finally, जो PM के पापुआ न्यू गिनिया के जो PM है जेम्स मरापे, उन्होंने जो है PM मोदी के चरण पैर छुए थे, which obviously got a huge amount of attention, both in India and abroad. Next topic, EU जो है Meta, which is the parent company for Facebook, उन पे फाइन किया है, which is one of the biggest awards for violation of privacy of the European users, और उनका डेटा जो है कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ruling है. And obviously this is founded in fears of the US cyber snooping.
तो जो रेगुलेशन है कॉल्ड जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर, ये यूरोप ने ईयू ने यूरोपियन यूनियन ने इस साल में लागू किया था। और जो पेनल्टी इस केस में 1.3 बिलियन डॉलर्स की पेनल्टी है। दिस इज दिस इज मच लार्जर देन द प्रीवियस लार्जेस्ट सम। सो कौन से कंपनी पे और कितना अमाउंट का फाइन जो है यूरोप पहले ही लगा चुका है, राइट? उसका नाम बताइए। एंड देयर इज अ डेटा प्रोटेक्शन, जो ये अभी वायलेशन पाया गया था, ये कौन सी कंट्री के डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ने ये वायलेशन पकड़ा था कि भाई मेटा ने 46 आर्टिकल 46(1) of the GDPR, which basically says that cross-border movement of data is only allowed if certain safeguards are ensured by the company, and obviously they felt that these safeguards were not built in। तो इस कंट्री का नाम बताइए। और फाइनली 2020 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है यूएस ईयू के डेटा फ्लोस को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, राइट? एंड देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड ईयू फॉर डेटा फ्लोस। तो उस एग्रीमेंट का नाम बताइए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, राइट? तो इसके आंसर्स है जीडीपीआर जो है 2018 में यूरोप ने इंप्लीमेंट किया था। इनफैक्ट they introduced it in 2015, but by the time it was enforced, it was 2018. And amongst the biggest cases before the Meta case was the Amazon fined with about $746 million for violation of privacy। और ये जो मेटा को पकड़ा है, ये Irish Data Protection Board ने पकड़ा है, saying that well appropriate safeguards have not been built in before cross-border transfer of data। और यूएस और ईयू के बीच में जो अग्रीमेंट था डेटा फ्लो के लिए, कॉल्ड प्राइवेसी शील्ड, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है नलिफाई कर दिया था। देयर आर टॉक्स फॉर अ प्राइवेसी शील्ड टू, बट नथिंग हैज फ्रक्टिफाइड येट। Let's move on to the next topic, which is BRICS। Well, BRICS, which was coined by Jim O'Neill, or Brazil, Russia, India, China, and then South Africa joining them in the year 2003, forms this collective called the BRICS। So China जो है initially China इस collective को join करना चाहता था, बट इंडिया ने जो है बाकी कंट्रीज के साथ, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ IBSA बना दिया था। बट चाइना ने जो है स्मार्ट वर्क किया और they basically brought South Africa into the BRIC, right? And hence they make it into BRICS। But the interesting point is that BRICS is doing much better now as compared to IBSA, which has become almost redundant, and most of the other sort of agreements इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछूंगा। The SARC has almost become dormant। इसका आखिरी समिट जो है कौन से साल में हुआ था और कौन से शहर में होल्ड हुआ था। और वर्ल्ड का जो है यूनाइटेड नेशंस इज द बिगेस्ट ग्रुपिंग ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, व्हिच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज, राइट? एंड इट्स वन व्हिच इज स्टिल एक्टिव इफ जस्ट इन नेम। एंड फाइनली कौन से कंट्रीज ने जो है ब्रिक्स, क्योंकि पॉपुलर हो गया तो कितने कंट्रीज जो है अभी करंटली मेंबरशिप इज ओनली 5, बट हाउ मेनी कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट टू जॉइन दिस ग्रुपिंग। एंड नेक्स्ट ब्रिक्स समिट जो है 23-24 अगस्त 2023 में होगी, तो इसको होस्ट करने वाली कौन सी कंट्री है, राइट? सो आंसर्स देखेंगे इसके। लास्ट समिट फॉर द सार्क हैपेंड way back in 2014, and then at that point in time it happened in Bangladesh, right? काठमांडू के शहर में हुआ था ये 18वां सार्क का समिट, and the 19th one was supposed to happen in Pakistan, but COVID and sorry, not COVID, the Uri sort of disaster happened, Uri strikes happened, and well, things have never sort of picked up after that। The biggest sort of alternative to biggest grouping after the United Nations is the non-aligned movement, started way back in 1959, I think it was। And currently BRICS में जो है 19 countries have expressed an interest in joining the BRICS, which includes Asian, Latin American, and well, Central Asian nations as well that want to join the BRICS nations। And BRICS का अगला समिट जो है साउथ अफ्रीका में होल्ड किया जाएगा, which will be the host, and this summit will be held on 23-24 August of 2023।
Next topic, something which is making the news all the time, is the Krishna River water dispute between Telangana and the state of Andhra Pradesh, right? And so Telangana is vehemently sort of keep saying that, well, we deserve a lion's share of water from the Krishna, and uska pani aise एपी पे एलिगेशन भी है कि आंध्र प्रदेश जो है उसके पानी को डाइवर्ट कर लेता है, राइट? तो सवाल ये पैदा होता है कि आंध्र प्रदेश जो है का स्टेट, सबसे पहले आंध्र प्रदेश का स्टेट कब फाइन बना था, एंड 1969 में एक ट्रिब्यूनल बनाई गई थी इन ऑर्डर टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन थ्री रिपेरियन स्टेट्स, आर बेसिकली एग्रीकल्चरल स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो इस अग्रीमेंट का, इस ट्राइब्यूनल का नाम बताइए। द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो उस टाइम मिनिस्ट्री होती थी, अब तो इस मिनिस्ट्री में चल सकती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के एक मीटिंग में 2015 की बात है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने एग्री किया था कि एक एडहॉक अरेंजमेंट में एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर रिविजिट करेंगे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट व्हाट वाज द रेशियो दैट तेलंगाना एंड एपी वुड गेट फॉर शेयरिंग वाटर। और इंडियन पार्लियामेंट को कौन सी एक्ट है, व्हिच इज आल्सो नोन एज तेलंगाना एक्ट, जिसने आंध्र प्रदेश के स्टेट को बाइफोरकेट किया था एंड इनटू तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो उस एक्ट का नाम बताइए। और इस एक्ट के अंडर for water management, management of water resources between these two states, they had recommended that two river water management boards should be set up, and one of them was obviously on the Krishna River. Which other river was this board recommended? So answers देखेंगे। 1956 में आंध्र प्रदेश का स्टेट फॉर्म हुआ था, एंड बचावट ट्रिब्यूनल जो है 1969 में कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी in order to set out the settling the share of waters between the states of Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra, and जब 2015 में वाटर मिनिस्ट्री ने एक अग्रीमेंट किया था, एडहॉक अरेंजमेंट किया था, तब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जो है इन द रेशियो 34:66 वाटर शेयर करने का एग्रीमेंट किया था इन्होंने। बट obviously since then Telangana has changed its stance. They basically now say, well, we are a different state now, we deserve to get at least 50%, if not a majority share of the water. The AP Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014, ये एक्ट था जिसने एपी के स्टेट को बाइफरकेट किया था and led to sort of Telangana being formed, and finally under this act Krishna River Water Management Board और Godavari River Water Management Board establish करने का arrangement था। Final topic for the day, copyright infringement and how it's related to AI. तो basically एक recent judgment Supreme Court की आई है on the Andy Warhol Foundation, and this is a foundation for the visual arts, and the other party being Goldsmith, etc., which was a firm which or Mrs. Goldsmith had clicked this famous picture of the pop artist and icon Prince, और उन्होंने ये जो फोटो ली थी जो कहीं भी पब्लिश नहीं हुई थी, उन्होंने ये फोटो जो है एंडी वॉरहॉल को लाइसेंस पे दिया था फॉर अ सिंगल यूज, बट एंडी वॉरहॉल एंडेड अप developing it, developing 16 versions of it, and obviously when Goldsmith got Andy Warhol, by the way, not no more, but his foundation has been sued. In fact, the foundation first got wind ki bhai, basically the idea was that the 16 prints were developed, and after Andy Warhol died, the foundation sort of licensed it to other entities, and they got revenue for it, but nothing was paid to Mrs. Goldsmith. इनका original photograph था, right? So the case in in the US was whether there was a substantial change in the art form itself, in the photograph itself, and does it then become a separate piece of art, or does it not substantially change, and hence would some royalties also be liable to be paid to Goldsmith, Mrs. Goldsmith. So पहले lower district court जो है they sort of said that, well, there is not a substantial change and they're quite similar, but when it got to the Supreme Court, well, the verdict was quite landmark. तो क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले जो है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यूरोपियन नेशंस में, कॉन्टिनेंटल यूरोप में जो अप्रोच लिया जाता है, it's a very specific approach in Europe. What is that called?
And US का approach is very, very different. It's a little more open-ended, and you know, which factor does is given the most amount of importance when determining whether, you know, a particular use of a copyright of an item can be considered as fair use or not, right? So what is the most important factor? And Supreme Court में जो मैंने केस बताया था अभी, एंडी वॉरहॉल फाउंडेशन वर्सेस मिसेस गोल्डस्मिथ एक्सेट्रा, तो उनमें उस केस में जो यू नो मेजॉरिटी वर्डिक्ट है, उनका वर्डिक्ट किसके फेवर में था, राइट? एंड फाइनली, क्योंकि मैं एआई का मेंशन कर रहा हूं, तो ये अबव केस हैज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट implications फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ एआई कॉल्ड विच वंस. एंड इंडिया का जो है कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया, व्हेन वाज, in which year was it passed, and you know, इंडिया का जो है कॉपीराइट देखने का तरीका, fair usage देखने का तरीका जो है, what kind of a model do we keep, do we follow in terms of exceptions, and in which fair dealing of copyrighted work is exempted in specific instances, right? So section 52 of the Copyright Infringement Act, Copyright Act of India, उसके अंडर लिस्टेड है. तो ये कैसा है, कैसा मॉडल है? तो आंसर्स देखेंगे. the model followed by the you know, European Union and most of EU countries is an enumerated exceptions approach, की मतलब जो जैसा agreement में, जैसा license agreement में लिखा गया है, will go by the letter of what is, you know, agreed upon, what is the contract, whereas US takes a more holistic sort of open-ended view of it, and they put particular importance on the purpose and character of the use of such, you know, copyrighted work, right? Whether in judging whether it was fair use or not. And the Supreme Court basically ruled in favor of Mrs. Goldsmith and said, well, the change is not substantial, and you know, the image itself is very you know, is being put to commercial use, and it's being put to commercial use in much the same form as what the original image was. So, you know, put liability on Andy Warhol Foundation, AWF, and Mrs. Goldsmith, you know, obviously can enjoy whatever comes out of it. But this is a case, इसका implication बहुत ज़्यादा है on generative AI tools, जो so basically फोटोग्राफ्स को जो है जनरेट करते हैं, फोटोग्राफ्स और इमेजेस जो है दूसरे के वर्क लेके जनरेट करते हैं. सो obviously the question is that if an AI transformer invariably generates an image, let's say of the same Andy Warhol, you know, image, then will that be considered, you know, infringement of copyright? And so this, at least the Supreme Court verdict of the US, which has important implications, because India and other nations will also sort of mirror this kind of an approach. So it's very, very, you know, important and very, very consequential. इंडिया का कॉपीराइट एक्ट जो है 1957 में पास हुआ था. इंडिया एक हाइब्रिड मॉडल यूज करती है in judging whether copyrighted work is, you know, fair or not, and what kind of exceptions can be passed in specific cases under section 52 of the Copyright Act of India, right? This wasn't the last topic. Last topic actually हमारा है कि इंडिया अपने सुपर कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाने के you know, position में है. We in fact plan to install an 18 teraflop system, you know, over the course of this year. और ये जो अर्थ साइंसेस के रिसेंटली अपॉइंटेड मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी. तो ये 18 पीटाफ्लॉप का जो सिस्टम हम बनाना चाहते हैं, तो उसमें समझते हैं कि एक पीटाफ्लॉप इज टेक्निकली इक्वल टू, यू नो, हाउ मेनी फ्लॉप्स. एंड इंडिया का, यू नो, जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, उसको पायनियर करने वाले जो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव इन सुपर कंप्यूटिंग, उनका नाम दिया जाता है, वो कौन है? और इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स इस मोमेंट पे कौन से हैं, and where are they currently housed, which facility are they currently housed? In fact, in the same facility, these you know, new supercomputers that India is acquiring, वो भी वहीं जाकर के हाउस होंगे. इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ 4,500 करोड़ की डील करी है in order to acquire these high performance computers? तो ये कौन सी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंट्री है? And finally, in the world, where is the fastest high performance supercomputing system? ये कौन से लोकेशन में प्रेजेंट है, राइट? तो 1 petaflop is actually equal to 1,000 trillion flops, right? So
well, it's almost equal to a million billion flops. And Sri Vijay Bhatkar is known as the architect of India's supercomputing initiative in supercomputing. Currently, Pratyush और मिहिर इंडिया के सबसे फास्टेस्ट सुपरकम्प्यूटर्स माने जाते हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे में फैसिलिटी है, ये यहाँ पे हाउस है. दिस इज वेयर द अभी क्राइसिस नहीं हुआ है, बट ये 18 पीटाफ्लॉप का जो सुपर कंप्यूटर हम अक्वायर कर रहे हैं, ये भी इसी जगह में हाउस होगी. ऑब्वियसली यूज्ड टू प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न्स एंड कैन डू अ लॉट मोर डन वेरी वेरी क्विकली, राइट. इंडिया जो है परचेज कर रही है, साइन एक डील इंडिया ने करी है विद फ्रांस टू परचेज प्रोक्योर. In fact, this deal was signed in December 2018 to procure high performance computers, जिसके लिए 4,500 crore का deal sign हुआ है, and obviously we'll procure it by the year 2025. Currently world का जो फास्टेस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है वो यूएस के यूएसए में है, फ्रंटियर क्रे सिस्टम एट ओक ब्रिज नेशनल लेबोरेटरी इन द यूएस, राइट. सो दैट्स clearly the world's fastest supercomputer. Surprise, surprise, it's in the US. तो इसी के साथ आज के जो टॉपिक्स हैं वो समाप्त होते हैं. वेल, जाते जाते आपको मैं क्विक रिमाइंडर दे दूंगा. डोंट फॉरगेट टू साइन अप ऑन आवर पोर्टल, बिकॉज सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं वो तो टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे. साथ ही साथ आपको हमारे मॉक टेस्ट का पहला मॉक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. रिसेंटली क्लैट का अनाउंसमेंट भी आया है फॉर change in the pattern. Don't worry, we've got you covered. All of our mocks will reflect the new pattern that CLAT is going to announce. हमने वैसे भी पिछले कुछ सालों के मॉक्स को एनालाइज किया है, किस टाइप का लीगल रीजनिंग आता है, किस टाइप का करंट अफेयर्स, किस टाइप का लॉजिकल रीजनिंग वगैरह वगैरह. ऑल ऑफ दीज सेक्शंस आर एक्सट्रीमली क्लोज टू द एक्चुअल पैटर्न. सो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आज ही साइन अप कीजिए हमारे पोर्टल पे, फ्री में अपना मॉक एक्सेस कीजिए, and also enjoy the benefit of our detailed solutions and correct and diagnose your performance on our portal, right. तो आज ही साइन अप कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट स्टेप फॉलो कीजिए, एंड दैट फ्री मॉक टेस्ट विल बी ऑल योर्स. थैंक यू फॉर लिसनिंग. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. वीडियो को लाइक कीजिए if you enjoyed this, if you found this useful. Till the next video, this is me signing off. Thanks and have a great day.